Good morning, student. Class 9, 13.4. Question number 5. A hemispherical ball made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. This is the hemispherical ball. Okay. This inner diameter of this hemispherical ball will be 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on it inside. Tin plating on it inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter. First we find out the curved surface area of this hemispherical ball. So curved surface area of hemisphere will be 2 pi r square. 2, the value of pi will be 22 upon 7, diameter will be 10.5, therefore radius is equal to 10.5 upon 2 centimeter. The radius will be the half of the diameter. The curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square. Therefore, the curved surface area of this hemispherical ball will be 2 into 22 upon 7 into radius will be 10.5 upon में 2 into 10.5 upon 2. 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, 7 1.5. The multiply of 11 into 1.5 into 10.5 is equal to 173.25 centimeter square. The next is will be it on the inside at the rate of cost of tin plating. Tin plating means in the this bowl will be brass की मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कांसा. कांसे की कटोरी के ऊपर पहले कलई करना बोलते हैं. कलई करना मतलब टिन प्लेटिंग. द cost of tin plating at the rate of rupees 100 per 100 centimeter is equal to rupees 100. So therefore the cost will be cost of tin plating 100 centimeter square is equal to rupees 16. Therefore 1 centimeter square is equal to rupees 16 upon 100 and the 173.25 centimeter square is equal to rupees 16 upon 100 into 173.25. मल्टीप्लाई करेंगे 100, 16 into 173.25 is equal to 2772 is equal to rupees 27.72. अगेन वापस देख लीजिए. A hemispherical ball made with brass has inner diameter will be 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating inside this ball. The rate of the rupees 16 per 100 centimeter. First we find out the curved surface area of this ball will be 173.25 centimeter square. Second we find the cost of tin plating 100 centimeter square is equal to rupees 16. Therefore 1 centimeter square is equal to rupees 16 upon 100 and the cost of 173.25 centimeter square is equal to rupees 27.72. Okay, next question देखिए. Question will be sixth question. Find the radius of sphere. Find the radius of sphere. Find the radius of sphere whose surface area. Surface area, this is surface area will be sphere is 154. Surface area of sphere is equal to 154 centimeter. Find the radius of sphere. So formula of surface area of sphere is equal to 4 pi r square is equal to 154. 4, the value of pi will be 22 upon 7. R square is equal to 154. So R square is equal to 154. Cross multiplication 7 up ऊपर and 4 into 22. 11 से कैंसिल करें. 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 2 7 जा 14. तो R square is equal to 7 into 7 upon में 4. तो R is equal to स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 7 into 7 and 4 को लिखा 2 into 2. तो R is equal to 7 upon 2 सेंटीमीटर. अगेन वापस देख लीजिए.
फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल 22/7। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टी 154 इंटू 7/4 इंटू 22। 11 से कैंसिल किया तो आया आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7/4। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो क्या आया 7/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून, दिस इज ए मून एंड दिस इज ए अर्थ। The diameter of moon is 1/4 of the diameter of, suppose the diameter of earth will be x. Let the diameter of earth is equal to x. According to diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of earth, therefore the diameter of moon will be x by 4. So diameter of moon is equal to x by 4. The diameter of earth will be x, this is the earth and this is a moon. So diameter of earth is equal to x, therefore radius will be x by 2 and the diameter of the moon will be x by 4, therefore radius half of the diameter is equal to x by 8. According question, find the ratio of their surface area. तो surface area of moon upon में surface area of earth. The surface area of moon is equal to 4 pi r square upon surface area of earth 4 pi r square. 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. The radius of the moon will be x by 8. Therefore x upon 8 square. The radius of the earth will be x by 2. Next step, therefore x square 8 8 is 64 upon x square 2 2 is 4. अगली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 4 अपॉन 64 1 अपॉन 16 देयरफॉर 1:16. वापस देख लीजिए एक बार. क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. This is the earth and this is the moon. The diameter of the earth will be x, then the diameter of the moon will be x by 4. Radius of earth will be x by 2 because the diameter will be equal to x. The radius will be half of the diameter is equal to x by 2. And the diameter of the moon will be x by 4. The radius will be half of the diameter is equal to x by 8. Find the ratio of their surface area is equal to surface area of moon upon surface area of earth is equal to the formula of surface area of sphere is equal to 4 pi r square. Same formula is equal to 4 pi because the shape of earth and moon will be spherical shape. Okay, 4 से 4 cancel, pi से pi cancel. The radius of the moon is equal to x by 8 and radius of the earth is equal to x by 2. So x square upon 64, x square upon 4. Divide is changed into the multiplication, therefore cross multiplication 4 upon x square से x square cancel 4 upon 64 is equal to 1:16. Okay. Question देखिए 8. A hemispherical ball is made up of steel is 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of ball. This is a ball. बाउल है, बाउल इस तरह का अपना बना हुआ है, ठीक है.
this is a bowl. The inner radius of this bowl will be 5 centimeter. 5 centimeter, and thickness will be, this is a thickness will be 0.25 centimeter. Find the outer curved surface area. फाइंड करना आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस बाउल. तो देख लिए, तो टोटल रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी बाउल की, देखो 5 इनर रेडियस प्लस इसकी थिकनेस 0.25, तो 5 प्लस 0.25, तो रेडियस विल बी 5.25 सेंटीमीटर. वापस समझ लीजिए, द इनर रेडियस ऑफ दिस बाउल विल बी 5 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस विल बी 0.25 सेंटीमीटर. Find the outer curved surface area of this bowl. So radius will be 5 plus 0.25 is equal to 5.25 centimeter. Therefore, outer curved surface area of bowl is equal to 2 pi r square is equal to 2. The value of pi is equal to 22 upon 7 and radius will be 5.25 into 5.25. कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 44 इंटू 0.2.75 5.75 इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगेन वापस देख लीजिए, a hemispherical bowl with made of steel 0.25 centimeter thickness, that is a 0.25 inner radius will be 5. So find the outer curved surface area. So therefore radius will be 5 plus 0.25 is equal to 5.25 centimeter. Outer curved surface area of bowl is equal to 2 pi r square. This is a 2 into 22 upon 7 into 5.25 into 5.5. Therefore 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ठीक, radius will be r. This is r and this is also r. The height of the cylinder will be r plus r is equal to 2r. The height right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r. Find the surface area of sphere. First, surface area of sphere is equal to, direct formula only radius r, therefore 4 pi r. Second, curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder, formula is equal to 2 pi r h. 2 pi r, height will be 2r. The radius of the sphere also cylinder will be r. Radius of cylinder will be r. Therefore 4 pi r square. Surface area of sphere is equal to 4 pi r square. Curved surface area of cylinder 2 pi r h. 2 pi r, radius will be r. Height will be r plus r 2r. Therefore 4 pi r. The ratio of first and second is equal to 4 pi r square. And the second also 4 pi r square is equal to, cancel, 1 upon 1 is equal to 1:1. सबसे पहले देख लिए, a right circular cylinder just enclosed a sphere. Surface area of square is equal to 4 pi r square. Curved surface cylinder 2 pi r h. Height will be 2r. Therefore 4 pi r square. The ratio of first and second is equal to 1:1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए, a match box measure 4 centimeter, 2.5 centimeter, 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such box? So volume of one match box
This is a volume of cuboid. The shape is will be cuboid is equal to L into B into H. The length will be 4 into 2.5 into 1.5. 15 centimeter cube. First, one matchbox, volume of matchbox will be shape of cuboid. This is a cuboid. The volume of cuboid is equal to L into B into H will be 15 centimeter cube. So volume of 12 box is equal to 12 into 50 is equal to 180 centimeter cube. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑफ वन वॉच बॉक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ 12 such box is equal to 2.5. This is 1.5. So 12 such box is equal to 12 into 15 is equal to 180 centimeter cube. Okay. क्योंकि a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 5.5 meter deep. How many liters of water can it hold? Simple question. Volume of cuboid is equal to L into B into H. Therefore, L will be 6 meter, breadth will be 5 meter and height will be 4.5 meter. तो कितना आएगा 135 मीटर क्यूब. ओके. अपने को वाटर लीटर में निकालना है. तो देखो 1001 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. देयरफॉर 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 इंटू 1000. देयरफॉर 135000 लीटर. ओके. 1,35,000 लीटर. Again, वापस repeat the question. A cuboidal water tank of 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? The volume of cuboid is equal to L into B into H is equal to 135 meter cube. 1 meter cube is equal to 1000 liter. Therefore, 135 meter cube is equal to 135 into 1000. Therefore, 1,35,000 liter. देखिए एक क्यूबॉइडल वेजल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड. लेंथ विल बी 10 मीटर, ब्रेथ विल बी 8 मीटर. हाइट फाइंड करना एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हैज़ बीन गिवन इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब. हाइट फाइंड करना है. देयरफॉर L इंटू बी इंटू H is equal to 380. Length will be 10, breadth will be 8 meter, height is equal to 380. The cross multiplication height is equal to 380 upon में 10 into 8, 0 से 0 cancel, 8 is equal to 8 4 जा 32. तो क्या आया 4.5 मीटर. वापस देख लीजिए. लेंथ ब्रेथ दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम विल इक्वल L इंटू बी इंटू एच. पुट द वैल्यू, फाइंड द हाइट. हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर. क्वेश्चन देखिए फोर्थ. फाइंड द कोस्ट ऑफ ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप. Find the cost of digging at the rate of rupees 30 per meter cube. First we find the volume of cuboid. Volume of cuboid is equal to L into B into H is equal to 8 into 6 into 3 is equal to 144 meter cube. First we find the volume of cuboid is equal to L into B into H. Second, find the cost of digging of cuboidal pit at the rate of rupees 30 per meter cube. So the cost of 1 meter cube is equal to rupees 30. So the cost of 144 meter cube is equal to rupees 30 into 144
1320 रुपीज 4320 सॉरी चूज दिए भैया 4320। अगेन देख लीजिए, फर्स्ट वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड सेकेंड वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस क्यूबॉइड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू रुपीज 30 एंड द कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू रुपीज 4320। क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। कैपेसिटी इज इक्वल टू 50,000 लीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, चेंज द मीटर क्यूब, 50,000 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब, देयरफॉर 50 मीटर क्यूब। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी 50 मीटर क्यूब। लेंथ एंड डेप्थ हैज बीन गिवन। लेंथ will be 2.5 meter and height will be 10 meter. Find the breadth of this tank. So volume is equal to L into B into H. Volume has been given will be 50 meter cube. Length will be 2.5. Breadth will be find and height will be 10. So 50 equal to 2.5 into 10, 25 into B. Cross multiplication, therefore 50 upon 25 is equal to B. So breadth will be 2 meter. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव गिवन इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक 50,000 लीटर। लीटर इज कन्वर्टेड टू द मीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। लेंथ विल बी 2.5 मीटर एंड हाइट विल बी 10 मीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, देयरफॉर ब्रेथ विल इज इक्वल टू 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a village having population of 4,000, a village having population have 4,000 required 150 liters of water per head per day. Per head requirement is equal to 150 liters of water. In the village population will be 4,000, therefore per day per head will be 150 liter water will be use, therefore 4,000 person, therefore total water use in one day is equal to 4,000 into 50 is equal to liters. In the one day, the village having water requirement will be 4,000 into 150 is equal to 6 lakh liter. Okay, liter is converted to meter cube, therefore 6 lakh upon में 1000 meter cube is equal to 600 meter cube. In the one day, water requirement in the village has been 600 meter cube. In the tank has measuring 20 meter into 15 meter into 60 meter. How many days will be water of this tank last? So number of days is equal to volume of tank upon में water requirement in one day. So therefore volume of tank is equal to L into B into H, and in the village the water requirement of one day is equal to 600. So length is equal to 20 15 into 6 upon में 600 is equal to 3 days. मतलब उस विलेज के अंदर जो पानी का जो टैंक है, वाटर का टैंक है, वो उस विलेज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3 डेज तक उसमें वाटर अपने को यूज़ कर सकते हैं। टोटल 3 डेज, लास्ट 3 डेज। मतलब जो टैंक का जो मेज़रमेंट है वो है 20 इंटू 15 इंटू 6 देयरफॉर वॉल्यूम इज 15 इंटू 30 देखो 20 इंटू 15 इंटू 6 मतलब 1800 मीटर क्यूब है उस टैंक का वॉल्यूम। तो हाउ मेनी डेज
in the total one day में 600 meter cube water will be requirement, therefore number of days is equal to 3 days. Okay, next question देखिए एक go down measure 40 meter, 25 meter and 10 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter, 0.5 meter. One go down and creates how many crates in the go down, therefore number of is equal to number of crates is equal to volume of go down upon volume of one crates. Volume of go down L into B into H, and the volume of one caret is equal to L into B into H. So volume of go down will be 40 into 25 into 10, or 1 carats will be 1.5 into 1.25 into 0.5. First we cancel the point 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Okay. 15. 5 3s are 15. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 5 5s are 25. 25 400. So ठीक है. And 5 2s are 10. And 5 2s are 10. And cancellation will be 3. है वापस ये तो कैंसिल क्वेश्चन ही गलत लग रहा मुझे, क्योंकि ये 3 कैंसिल होगा नहीं. ये क्वेश्चन रॉन्ग था. एक गो डाउन इज मेजर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर. देखो तो देयरफॉर इन द क्वेश्चन विल बी, अगेन देख लीजिए, 40 25 into 15 and the carats will be 1.5 into 1.25 into 0.5. तो पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा, इंटू 1 2 3 4, हाँ 25 5 ज़ा 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 8 ज़ा 5 2 ज़ा, therefore 16,000 carats. वापस देख लीजिए, नंबर ऑफ कैरेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट्स इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H. कैंसिल किया इज इक्वल टू 16,000 कैरेट्स. ओके, क्वेश्चन देखिए. ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, A is equal to 12 centimeter, is cut into 8 cubes of equal volume. What will be side of new cube? देखो, volume of cube is equal to volume of 8 cube, because in the cut of 8 equal cube of equal volume, so volume of cube is equal to volume of 8 cube. So volume of cube is equal to A की power 3 is equal to 8 into capital A की power 3. तो A will be 12 की power 3 is equal to 8 into, therefore 12 into 12 into 12 upon में 8 is equal to A की power 3. 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 4 2 are 8. तो 6 की power 3 is equal to A cube. तो साइड ऑफ न्यू क्यूब is equal to 6 सेंटीमीटर. Capital A, the volume of solid cube is equal to 12 centimeter, side will be 12 centimeter, is cut into 8 cube of equal volume. So volume of cube is equal to volume of 8 cube. So A cube is equal to 8 into A cube. So 12 cube is equal to 8 into A की power 3. Cross multiplication 8 will be denominator, therefore 2 से cancel, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 will be cancelled. Therefore 6 की power 3, power से power cancel, A is equal to 6 centimeter. Find for ratio will be, therefore ratio of this will be 6A square upon में 6A square. 6 से 6 cancel, A will be 12 into 12 and small L will be 6 into 6. 6 2s are 12, 6 2s are 12 is equal to 4 upon 1, 4 ratio 1.
रेशो फाइंड करना है, पहले तो साइड फाइंड करी और दोनों का रेशो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 6a², इसमें सिंगल का वॉल्यूम 6 है, 6 से 6 कैंसिल, तो 12 × 12 अपॉन में 6 × 6 इज इक्वल टू 4:1. ओके. A river 3 meter deep and 40 meter wide at the rate of 2 kilometer per hour in 1 hour is equal to 2 kilometer. 60 minute is equal to 2000 meter. Find the how much water fall into the sea a minute. In the 1 minute the water flow out is equal to 2000 upon 60 meter is equal to 100 upon 3 meter. So volume is equal to L into B into H. In a 1 minute length will be 100 upon 3, breadth will be 40 and height will be 3 is equal to 4000 meter cube. A river 3 meter deep and 40 meter breadth at the rate of 2 kilometer per hour. 1 hour is equal to 2 kilometer hour converted to minute and kilometer converted to meter. And 1 minute is equal to 2000 upon 60 is equal to 100 upon 3 meter. In the 1 minute the sea level will be, length will be 100 upon 3 meter. The volume is equal to L into B into H is equal to 4000 meter cube. Thank you.